बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा. Dear second year students, today we are going to start our next lecture on the topic of urinary system of man. सेकेंड ईयर के तुलबा आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर का आगाज़ करते हैं जो कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम पर है. In the today's lecture, we will discuss the structural components of the human's urinary system. अजीज़ तुलबा आज हम पढ़ेंगे कि इंसानी यूरिनरी सिस्टम के कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स हैं और उनके क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं. The first component of the human urinary system is the kidneys. A pair of kidneys is found in the humans, and the kidneys are attached with the tubules that leads to the urinary bladder, and these tubes are called the ureter. Second component है. और इसी ही तरह से देखा जाए तो थर्ड कंपोनेंट यूरिनरी ब्लैडर और फोर्थ कंपोनेंट यूरिथ्रा है. The third component of human urinary system is urinary bladder, and the fourth one is the urethra. So these are the four basic structural components of the human urinary system. Now it is the diagrammatic representation of the human urinary system. In this diagram you can see the pair of kidneys and ureters that emerges from the kidneys and leads to the urinary bladder. The urinary bladder is a larger sac, and it opens to the outside of a body through a small tube that is the urethra. And this urinary bladder also has the sphincter muscles at the junctions of the ureter and the urethra. And these sphincter muscles actually prevents the backflow of urine. And the kidneys are supplied with the blood vessels, that is the dorsal aorta, and the veins are the arteries that enter and leaves the kidney. These are the renal arteries and the renal veins. Next is the structure and function of the kidneys. Human has pair of kidneys, means two kidneys are found in front of the dorsal body wall and are protected by the last two pairs of ribs. अजीज़ तलबा अगर देखा जाए तो इंसान में दो गुर्दे मौजूद होते हैं जो डोर्सल बॉडी वॉल के साथ अटैच्ड हैं और आखिरी दो पसलियाँ गुर्दों को प्रोटेक्ट करती हैं. एंड द शेप ऑफ द किडनीज इज़ बीन शेप्ड एंड इट इज़ द 1% ऑफ द टोटल बॉडी वेट. अगर देखा जाए तो गुर्दों की शेप लोबिया के बीज जैसी होती है और ये हमारे जिस्म के वज़न का 1% हिस्सा या 1% इनका वज़न होता है. एंड द किडनीज रिसीव्स 20% ऑफ द ब्लड ऑफ ईच कार्डियक बीट. और इसी ही तरह से गुर्दे जो डोर्सल एओर्टा से निकलने वाली रीनल आर्टरी के ज़रिए से अटैच्ड होते हैं. हर कार्डियक बीट का 20% ब्लड गुर्दों से गुजरता है जो कि गुर्दों में से वेस्ट को फिल्टर करने के लिए अच्छा खासा प्रेशर डेवलप करता है. So in this diagram you can see the three basic portions of the kidneys. The outer portion of the kidneys, it is the cortex, and the inner portion is the medulla, and the third portion that is not labeled in this diagram, it is the pelvis or renal pelvis. It is the funnel shaped or broad portion of the ureter inside the kidney. अगर देखा जाए तो गुर्दों को तीन मेजर पार्ट्स में क्रॉस सेक्शन में देखा जा सकता है. सबसे बाहर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स कहलाता है जिसमें पाए जाने वाले नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहलाएंगे, और दरमियानी हिस्सा गुर्दों का मिडल्ला कहलाता है जिसमें त्रिकोणनुमा पिरामिड शेप के रीनल पिरामिड्स भी मौजूद होते हैं. और तीसरा इसका कंपोनेंट रीनल पेल्विस है जो इस डायग्राम में लेबल नहीं किया हुआ, जो यूरिटर से ऊपर वाला पोर्शन जो फनल शेप यानी ब्रॉड पोर्शन गुर्दों में
दाखिल होता है, जो कि तमाम रीनल पायरामिड्स के ज़रिए से यूरिन को इकट्ठा किया जाता है। रीनल पेल्विस है, यूरेटर से ऊपर वाला, यूरेटर से लेवलिंग से ऊपर वाला पोर्शन रीनल पेल्विस लेवल करेंगे। एंड now you can see the structure and function of the kidneys. In the cross section you can see kidneys comprises of the cortex, medulla. Medulla also contain the renal pyramid, and the third component in cross section of the kidneys is the renal pelvis. Outer portion, that is red in color, is the cortex, and the middle portion is called medulla. The trigonal structures are also present in the medulla. These are the renal pyramids. A cavity which collects the urine is the renal pelvis. It is present above the ureter. And the second component of our kidneys or the urinary system is the ureter. Ureter is a tubular structure. Pairs of the ureters moves out from the each kidney, and the ureters drain urine from the pelvis to the bladder. And the ureter is a tubule with broader upper end. अगर देखा जाए तो जो दूसरा कंपोनेंट ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में पाया जाता है वो यूरेटर है, यानी ये वो नालियाँ हैं जो गुर्दों से यूरिन को ब्लैडर तक मुंतकिल करने का ज़रिया बनती हैं। हर किडनी में से एक एक ये नाली मौजूद है। यूरेटर के ज़रिए से जो रीनल पेल्विस में गुर्दे में इकट्ठा होने वाला यूरिन वो ब्लैडर तक पहुंचता है। और इसी ही तरह से अगर देखा जाए तो यूरेटर का जो अपर एंड है वो फनल शेप यानी ब्रॉड होता है, जो पेल्विस के साथ कनेक्ट है और यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर जाने में मदद देता है। The third component of human urinary system is the bladder or the urinary bladder. Bladder is a large sac that stores the urine. And this bladder also has the sphincter muscles that are present at the junction of the ureter and the urethra by the urethral and the urethral orifices. And these sphincter muscles actually prevents the backflow of the urine. अजीज तलबा, अगर देखा जाए तो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का तीसरा कंपोनेंट ब्लैडर है, जो एक बड़ा सैक थैलानुमा स्ट्रक्चर जिसका काम यूरिन को स्टोर करना है। और इस ब्लैडर में जहाँ से यूरेटर्स और यूरेथ्रा अटैच होते हैं वहाँ पर ख़ास तरह के स्फिंक्टर मसल्स, जिन्हें हम कहते हैं ये यूरेट्रल या यूरेथ्रल ओरिफिस पर पाए जाने वाले स्फिंक्टर मसल्स हैं, जो यूरिन के बैक फ्लो को रोकने में का बायस बनते हैं, यानी यूरिन को वापस किडनीज या रिनल पेल्विस में जाने से रोकते हैं। So the last or the fourth component of the human urinary system is the urethra. Urethra is a tube by which urine leaves the body. Urethra empties near the vagina in the female and through the penis in the male. अगर देखा जाए तो चौथा कंपोनेंट ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का ये यूरेथ्रा है, जो कि हमारी बॉडी से यूरिन को बाहर खारिज करने का सबब बनता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ज़रिए से। फीमेल में वेजाइना में यूरिनरी सिस्टम की अलग से ओपनिंग है, जो वेजाइना में ओपन होती है यूरेथ्रा के ज़रिए से, जहाँ से वेस्ट बॉडी से बाहर खारिज होता है। और इसी तरह से मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी पीनस के ज़रिए से यूरेथ्रा बॉडी से बाहर ओपन होता है और यूरिन को बॉडी से बाहर खारिज करने में मदद देता है। So it was our today's lectures about the urinary system of man. Good luck and stay blessed.